So this shows the maturity of the economy and the direct beneficiary as an expert in finance are CAs. Correct sir, very much. इस रेट में सीए बनने के बाद बेरोजगारी दर तो ना के बराबर है. मतलब आई हैवंट सीन एनीवन हु इज अनएम्प्लॉयड आफ्टर बीइंग अ सीए. बल्कि इवन जो हाफ सीएज होते हैं या जो सीए फाइनल्स में हैं उनके पास भी इतना एक्सपोजर उनको हो जाता है कि दे कैन गेट एब्जॉर्ब्ड इन एनी इंडस्ट्री. We can practice in FDI, FEMA. We can practice in IPRs, which is called the intellectual property rights. We can practice or specialize in insolvency. We can specialize in GST, goods and service tax. So all these things have emerged in last few years. सीए का सिग्नेचर पीएम के सिग्नेचर से भी पावरफुल होता है. प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की ये उत्साहवर्धक बात इस बात को दर्शाती है कि हमारे समाज में सीए प्रोफेशन को कितने रिस्पेक्ट के साथ और ट्रस्ट के साथ देखा जाता है. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर सिंबल ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी. लगभग 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट 140 करोड़ हमारे देशवासियों को सर्व करते हैं विद सेंस ऑफ प्राइड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. आज इस एपिसोड में वी विल कंडक्ट लाइफ ऑडिट ऑफ CAs. हमारे साथ कुछ CAs हैं जो नॉर्मली आदत है इनको ऑडिट करने की ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, लेकिन हम लोग इस एपिसोड में कोशिश करेंगे उनकी जर्नी को जानने की. समझेंगे कि एक CA जो कोर्स है वो क्यों इतना ग्राइंडिंग कोर्स है, जिसमें हम लोग सब इनके एग्ज़ाम्स, रिज़ल्ट्स, उनकी जर्नी, अप्स एंड डाउन्स, प्रोफेशनल सक्सेस और पर्सनल ग्रोथ, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे. हमारे साथ हैं आज CA राहुल पाठक, CA नितिन डागा, Hi everyone. CA पुरुषोत्तम प्रसर, हेलो. और मैं CA सुरेंद्र तिवारी. कोशिश करूँगा ये जानने की कि हम लोग अगर खुद के ऊपर लाइफ ऑडिट करें तो क्या क्या बातें हैं, क्या क्या बिंदु अपनी जर्नी में निकल के आती हैं. सो लेट्स हैव क्विक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन. लेट अस स्टार्ट विद राहुल. सो राहुल, हाउ हैज़ बीन योर जर्नी एज अ CA? My journey has been a very interesting one. Honestly speaking, I never wanted to be a CA. Actually, my father wanted me to be a CA, and it was he who insisted me to get enrolled for CPT, जिसको पहले CA Foundation के नाम से जाना जाता था. तो at that time I was just starting my BCom with the prestigious St. Xavier's College in Kolkata. तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एंड वो जर्नी ख़त्म हुई नवंबर 2020 के अटेम्प्ट में, when I finally cleared my CA finals. In between articleship के बाद I started working for HSBC Kolkata as a fund accountant. I worked there for 2 years and उसके बाद I switched to Apex Fund Services Bangalore as a hedge fund accountant. I worked there for a year और वहाँ पर ही काम करने के साथ साथ I cleared my CA finals. And फिर CA फाइनल क्लियर करने के बाद आई जॉइंड स्टेट कॉर्पोरेशन एज अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिस्ट ऑफ हेज फंड्स एंड प्राइवेट इक्विटी फंड्स. फ्रॉम लास्ट ईयर आई स्टार्टेड माई बिग 4 जर्नी विद Deloitte. आई स्पेंड अराउंड 1 year in Deloitte and right now I am working as an audit senior in Ernst & Young for Kolkata location. So that has been my journey so far, and one of the most important learnings I have learned in my journey is that we should never give up on our dreams. So Nitin, how has been your journey as a CA? Thank you Surinder ji for giving me an opportunity to express my journey as a CA. It has been very interesting but typically different, I would like to say. Actually, it started in 2006. I always aspired to have a dual degree, CA-CS or a CS-LLB or a CA-LLB. And then after clearing my BCom, when I started a journey as CA intermediate. 2006 when I started my intermediate, and by 2010 I was done with my CA finals. So after completing my CA finals, I decided that why not specialize in something where I have always lagged or where something which has troubled me.
So it was SEBI takeover, which has always, as a student, always troubled me a lot. So there where I went ahead with my articleship in a merchant banking company where I learned SEBI takeover code. So there where I thought of specializing, and when I joined my first job, it was when a company was coming out with an IPO. So I was in fact best suited for them, and for me it was a specialization. The code word for me has always been specialization. So thankfully I got an opportunity to explore my world there. And slowly the journey moved on where I started looking after legal, which I never wanted to. Then I moved on to insurance, commercial dealings, finance, everything, disputes. And then when I actually realized my boss has always been my mentor. He was a CA gold, he is a CA gold medalist, I'm sorry. But then he was the person who taught me one small but a very beautifully decorated one for CAs. That's common sense. You know, common sense as per him, and which now applied in my life, that is something which goes with the CA profession the most. You know, anything you want to do in life as a professional CA, you need to have common sense, right? And then you don't need to fear anything which you are doing. You mean if you are a CA, you can do good in legal, you can do good in insurance, or any other field in wherever you have been taught to learn or you have been taught to explore. So as a CA, there where I actually explored common sense in every field which I looked into. And here I am right now. I moved out of that job. I started my journey as an insolvency professional under the Insolvency and Bankruptcy Code, which was introduced in 2017. And now, right now, I'm practicing as an insolvency professional. Tiwari ji, thank you so much. This has been my expression towards my journey. But we are very curious to know how have your journey been as a CA? कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद देन आई वाज डायरेक्टली एनरोल्ड इनटू सीए इंटरमीडिएट. और सीए की जर्नी कुछ ऐसी रही, इतनी टॉपसी टर्वी सीखने की, कि देन आई realized very soon that it was not my cup of tea. So basically that was not my dream, it was dream of my bhai sahab, my big brother. So it was his dream for me to become a chartered accountant, first professional of my family. That inculcated at some later stage as my dream. And then I became chartered accountant in the year 2002 November batch, and from there on I joined insurance industry because insurance industry was opening up at that point in time, and I joined one of the startups in Kolkata, health insurance TPA Heritage, and I started taking interest into operations, administration and all those stuffs other than the typical financial jobs. So that journey continued for 14 long years, and we both grew, the organization as well as me as a person and professional. And then crept in what you call that you slip into the mode of very comfortable zone. So I developed my comfort zone and I was okay in that. Then came an opportunity of in the form of आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और भारत सरकार में काम करने का सपना, पर्टिकुलरली जो पूर्वांचल से हैं, यूपी बैकग्राउंड से हैं, उनका एक सपना होता है भारत सरकार में काम करना. मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं वो दबी हुई इच्छा थी, और जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने उसको ग्रैब किया. आई अप्लाइड एंड आई गॉट सेलेक्टेड. सो आई स्टार्टेड माई जर्नी इनटू फ्रॉम settled private job to the government at the level of joint director, and I was taking care of the operations of the scheme, and we learnt a lot under the able leadership of Dr. Indu Bhushan sir, and then I had first hand experience of how government works. From there, spending around 30 months, I again came back to private industry. I joined one of the leading companies in health insurance space, MediAssist, and at leadership level in Bangalore. I shifted to Bangalore from Kolkata, Delhi to Bangalore, and then after finishing 2 years, I again started another journey. So
I did not allow myself to slip into that comfort zone again. From 1st July 2023 on CA Day, I started my journey as the first life auditor of the country. And yes, my learning has been immense, and I think what I would like to summarize as the best of both worlds. That means the governance from the government of India and the efficiency of private companies. So I believe that the process driven approach takes you to places. So पुरुषोत्तम जी, आप सुनाएं आपकी सीए की जर्नी कैसी रही, क्योंकि आई एम श्योर हम सबकी अलग अलग है, तो आप में भी कुछ अलग ही तड़का होगा ऐसा लग रहा है. Thank you, Surendra. I want to become a army officer. My father want me to become a doctor because I was a science student. So this was something different for me. So कुछ दोस्तों ने मेरे को बताया कि there is some course CA. So I changed my entire stream from science to commerce and I enrolled myself in CA foundation. बट एक डर था बिकॉज लोगों ने इतना डरा दिया था कि ये एक बहुत लंबा कोर्स है, द एंट्री इज़ वेरी इजी, एग्जिट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो एक डर था, बट फाउंडेशन देने के बाद पास कर गया. उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद फाइनल. सो विद इन अ स्पैन ऑफ 3.5 years आई क्वालिफाइड एज अ CA. अगेन CA जैसे ही क्वालिफाई कर गया, देन देयर इज़ अ डायलेमा बिकॉज व्हेन ऑप्शंस आर देयर विथ यू, तो दिमाग ऑलवेज बोथ ऑप्शंस को देखता है, वेदर टू गो इन प्रोफेशन और डू एज अ सर्विस. सो ये ऑलवेज उथल पुथल उस दिन से लेकर आज तक चल रही है. सो आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ जूनियर एग्जीक्यूटिव इन फ्यू कंपनीज, स्मॉल कंपनीज, एंड देन आई मूव टू माई करंट ऑर्गेनाइजेशन which deals in iron and steel in Eastern India, and it is a very prominent name in Eastern India. And it has a top line of approx 2,000 crore. So there also I joined as a executive, and within a span of 13 years now I am a CFO of this organization, handling different facet of the organization. So as per me, CA are all rounders. So you not be an expert of thing, but you have to be a all rounder because in a industry. So ये मेरी जर्नी थी. तो बिकॉज यू आर यंगेस्ट ऑफ ऑल ऑफ अस फॉर सिटिंग हियर, तो क्यों नहीं तुम बताते कि आजकल सीए के कोर्सेज कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, बिकॉज इट्स अ डायनेमिक कोर्स. सो हर कुछ वर्षों में डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी इंस्टीट्यूट चेंज करते रहते हैं कोर्सेज को. तो अभी कैसे, मतलब हाउ इज़ द स्ट्रक्चर लाइक? हाँ, आपने सही कहा. लाइक इंस्टीट्यूट सर्टेन पीरियड में जो कोर्स है हमारा उसमें कुछ चेंजेस लेके आता है, बट दैट इज़ बेसिकली टू जो इंटरनेशनल डिमांड है उसके हिसाब से कोर्स को प्रिपेयर किया जाता है. और उसके अलावा जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं प्रोफेशन के, स्टूडेंट्स हैं, और जो मार्केट में जो कंपनीज़ की जो डिमांड है कि भाई उन्हें इस तरह के CAs चाहिए, तो इन सब चीज़ों का भी एक इफ़ेक्ट आता है जो कोर्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस किया जाता है. तो अभी जैसे व्हेन आई बिकेम अ CA, हमारे टाइम पे क्या था कि CPT जो CA फाउंडेशन के नाम से जाना जाता था उसको CPT कहते थे. तो वहाँ पे एंट्रेंस होता था, मतलब CPT इज़ एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन. उसमें आपका लाइक 6 महीने का समय जाता है इंक्लूडिंग एग्ज़ाम्स, और अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया तो उसके बाद आप IPCC में इनरोल हो सकते हो. IPCC अगेन इज़ अ 9 month जर्नी. 2 ग्रुप्स होते हैं उसमें, लाइक CPT में कोई ग्रुप नहीं होता है. और IPCC भी अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हो तो 9 महीने में वो भी पूरा हो जाता है. IPCC के बाद वहाँ पे अपने को लाइक जो CA स्टूडेंट्स हैं उनको आर्टिकलशिप के लिए इनरोल कराना होता है. तो ये जो चीज़ है अभी, लाइक पहले क्या होता था, मैंने सुना है कि CA फाउंडेशन के बाद ही आर्टिकलशिप स्टार्ट होती थी. राइट. तो मेरे ख्याल से 20 साल पहले अगर हमारे समय की बात करें, जो ये कोर्स करिकुलम था वो जैसे CA फाउंडेशन था, इंटरमीडिएट और फाइनल, तो इस तरह का सेटअप था. और इसमें आर्टिकलशिप इन बिटवीन कहीं आता था, जहाँ पे फाउंडेशन के बाद आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो रही है, और उसमें कुछ महीनों का खाली गैप होता था.
3 साल का गैप नहीं होता था और आप इंटरमीडिएट और फाइनल के एग्ज़ाम दोनों देते हुए भी आर्टिकलशिप कर सकते थे, ऐसा सीन उस समय था। बट आई एम श्योर अभी वो चीज़ का शेप थोड़ा चेंज हो गया है करिकुलम का। राइट, ये जैसे हमारे टाइम पे सीपीटी ही था, फिर आईपीसीसी, एंड आईपीसीसी के बाद आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप आर्टिकलशिप स्टार्ट होने के 2.5 साल के बाद आप फाइनल अपीयर कर सकते हो। तो आपने सही कहा, जैसे अभी इंस्टीट्यूट ने एक नया प्रपोज स्कीम लाया है जो कि मई 2024 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल होगा, एंड उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वापस सीपीटी से चेंज होकर उसको सीए फाउंडेशन कहा जाएगा और आईपीसीसी को वापस इंटरमीडिएट के नाम से जाना जाएगा। फाइनल एज इट इज़ रहेगा। और एक और मेजर चेंज जो है, आर्टिकलशिप पीरियड को 3 ईयर से घटा के 2 ईयर्स का किया जा रहा है। तो कोर्स ड्यूरेशन जो प्रीवियसली 5 ईयर्स अप्रॉक्स होता था वो 6 महीने या साल भर से घटेगा, क्योंकि आर्टिकलशिप पीरियड इज़ गोइंग टू गेट डिमिनिश्ड बाय अ ईयर। तो दैट इज़ द मेजर चेंज जो अभी होने वाला है। राहुल, ये जो आर्टिकलशिप है, ये सीए का आर्टिकलशिप, इट्स ऑल्सो अ ट्रेनिंग, राइट? सो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सम अदर कोर्स ट्रेनिंग? वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस इज, आई विल से, जो ड्यूरेशन है आर्टिकलशिप का 3 इयर्स का, आई रेयरली सी कि अदर डिग्रीज में ऐसा इतना लंबा कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पीरियड होता है। और इसका एडवांटेज ये है, लाइक सीपीटी और आईपीसीसी में स्टूडेंट क्या होता है कि वो थ्योरेटिकल नॉलेज लेके आता है कि ये सब चीज़ें होती हैं, बट आर्टिकलशिप में ही गेट्स द रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। उसको फर्स्ट हैंड एक एक्सपीरियंस मिलता है कि हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क इन द रियल लाइफ। लाइक आईपीसीसी में डायरेक्ट टैक्स में हम पढ़ते हैं कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिसेज आती हैं, ठीक है। बट आर्टिकलशिप में क्या होता है कि एक स्टूडेंट को उसका पूरा प्रोसेस पता चलता है कि नोटिस आने पे रिप्लाई कैसे करना है और व्हाट इज़ द एंटायर प्रोसेस। लाइक वो एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उसको मिलता है, जो कि इसका बेनिफिट्स ये होता है, मेजर बेनिफिट्स, कि अगर एक स्टूडेंट सीए बनने के बाद अगर प्रैक्टिस में जाना चाह रहा है तो दिस एक्सपीरियंस विल हेल्प द स्टूडेंट इन द लॉन्ग रन। और अगर आप लाइक एक स्टूडेंट अगर जॉब के लाइन में जाना चाह रहा है, जॉब मार्केट में, तो वहाँ पे भी जो डाइवर्सिफाइड जो नॉलेज उसको आर्टिकलशिप में मिल रहा है रिलेटेड टू टैक्स, ऑडिट, अकाउंटिंग, तो वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। लाइक इट ऑल्सो प्रिपेयर्स द स्टूडेंट, वो जो एक रिगरस रूटीन जो बनती है, लाइक आप दिन में आर्टिकलशिप कर रहे हो, उसके साथ साथ आप स्टडीज़ भी कर रहे हो, फिर ट्यूशन्स भी कर रहे हो साथ में, तो टाइम मैनेजमेंट एक आता है, स्टूडेंट को डिसिप्लिन बनाता है। तो ऑल दीज बेनिफिट्स आर देयर, एंड तो वी कैन कंक्लूड कि हाँ, आर्टिकलशिप के बिना लाइक इस कोर्स को इमेजिन करना ही नामुमकिन है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीए जर्नी। ये जो आर्टिकलशिप रिगरस ट्रेनिंग हमें मिलती है सीए में, और कोर्स करिकुलम ऐसा डिज़ाइन है कि हमें जो है ज़िंदगी को झेलना आ जाता है। तो ये झेलते झेलते कोर्स हम ज़िंदगी को झेलना सीख जाते हैं, और इस कारण से हमें ज़िंदगी में बाद में तकलीफ़ कम होती है, क्योंकि हम पहले से ही ट्रेंड और ट्यून्ड हो जाते हैं कि डिफ़िकल्टीज़ को, फेलियर्स को कैसे झेलें, और इस कारण से ज़िंदगी आसान बना देता है सीए। ये मेरा मानना है। हाँ, बेशक, मतलब एक मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो स्टूडेंट का डेवलप होता है, और इतना कुछ झेलने के बाद उसको, एक स्टूडेंट को इतनी आदत हो जाती है ना कि वो आने वाले चैलेंजेस को आराम से झेल सकता है। वो घबराने वाली जो एक चीज़ होती है कि जो अचानक अगर कोई विपत्ति आए किसी के ऊपर, तो वो पैनिक नहीं करेगा, क्योंकि ही नोज़ कि उसने इतना कुछ हैंडल किया है, सीए फाइनल क्लियर करके अगर वो यहाँ तक आया है तो आगे भी जो होगा वो हैंडल कर लेगा इजीली। तो ये कॉन्फिडेंस देता है आर्टिकलशिप। इस ट्रेनिंग के थ्रू उसको जॉब रेडी भी हो जाता है। एग्जैक्टली, हाँ, क्योंकि आर्टिकलशिप में बेसिकली हम ऑफिसेज में ही जाके मतलब एक प्रैक्टिसिंग सीए के अंडर में जो चीज़ें हैं वो सीखते हैं। तो एक ऑफिस एनवायरनमेंट में रहना और काम कैसे करना है या लोगों से बातचीत कैसे करनी, ये सब चीज़ें जो हैं मेक्स अ स्टूडेंट रेडी फॉर द जॉब। रोजगार में सुविधा होती है। एग्जैक्टली, लाइक मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस में किसी भी क्वालिफाइड सीए को बेरोजगार नहीं देखा है। लाइक ये एक ऐसा कोर्स है, लाइक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर कोर्सेज, इस रेट में सीए बनने के बाद बेरोजगारी दर तो ना के बराबर है। मतलब आई हैवंट सीन एनीवन हु इज़ अनएम्प्लॉयड आफ्टर बीइंग अ सीए। बल्कि इवन जो हाफ सीएज होते हैं या जो सीए फाइनल्स में हैं,
उनके पास भी इतना एक्सपोजर उनको हो जाता है कि दे कैन गेट एब्जॉर्ब्ड इन एनी इंडस्ट्री. लाइक मैं खुद CA क्लियर करने के पहले से 2 रेप्यूटेड MNCs में काम कर चुका हूँ. लाइक ये एक ऐसा कोर्स ही है कि इट प्रिपेयर्स यू टू बी जॉब रेडी. आई थिंक कुछ ऐसा ही हमारा भी मानना है. आई थिंक ऑल ऑफ अस एग्री टू योर पॉइंट. तो हर एक CA की अपनी अलग अलग जर्नी होती है, जैसा कि हमारा भी डिस्कशन में ऐसा समझ में आ रहा है. बट एक चीज़ कॉमन हम सब में रहता है, वो लॉन्ग आवर्स, लंबे लंबे कई घंटों तक, कभी कभी 12, 14, 18 घंटों तक हम लोग एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करते रहते हैं, कई हफ्तों तक. और उस दौरान जो चीज़ें हेल्प करती हैं वो है समोसा, कचौड़ी, जलेबी. तो नितिन, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा क्या ऑक्सीजन था? So very interesting, sir. I'll tell you, we used to wait for this break जहाँ पे हम मैगी खा सके, अपने ढंग से उसको एक्सप्लोर कर सके, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करें मैगी के संग, एंड संग संग पढ़ाई भी चलती रहे. दैट यूज टू बी द फन पार्ट. सुबह हम लोग जब ट्यूशन जाते थे तो और एक फन एलिमेंट होता है, कचौड़ी सब्जी खाना है ब्रेक में. सो ये जो एलिमेंट्स होते थे, दैट यूज टू बी द अल्टीमेट फ्लेवर ऑफ अस एंड ड्राइव फॉर अस टू स्टडी CA. बहुत अच्छा ब्लेंड होता था ये पढ़ाई के संग, ये जो समोसा चाट और ये मैगी का ब्लेंड. इट्स अ अल्टीमेट थिंग. सो येस, फॉर द प्रोफेशन ऑफ CA दिस यूज टू बी वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट टू विच एड टू द टेस्ट ऑफ द स्टडी. सो नितिन, तो हमें ये लगता है कि ये जानना चाहिए कि व्हाट आर द इमर्जिंग रोल्स ऑफ CA. इफ़ यू कैन हेल्प अस विथ द various emerging role of CA, that will be really wonderful for us. Sir, as we all know, the role of a CA is very dynamic. Right from the basic curriculum of the studies and then the training module, and then we are all getting ready, prepared to get into the field to start our journey as a chartered accountant. We go through an ultimate phase of learning and training. This creates a momentum for us to go and dwell upon the specialization. When we say emerging role, you see, the curriculum itself is so beautifully drafted and crafted that one has to understand that they can definitely learn a lot from various fields, but then ultimately specialize into one stream. To specialize into one stream, we have to go through a lot of training, a lot of learning of various other fields, right? When I talk about various other fields, we talk about taxation, accounting, finance, insurance, law, even digital accounting. So a lot of things involved in it. It doesn't happen overnight. You have to grill yourself through a period of time to reach a level. But the role, emerging role, as we are talking about right now, most importantly, this came up in a big manner that India is now opening up, the economy is opening up, where a lot of foreign investments are being pooled, right? The exports and imports are increasing here in India. So this opened up a lot of exposure and a lot of scope for CAs to explore and do wonderful, right? And thanks to the, again, the curriculum that we have learned those things, that we now get into the field where we can connect what we have learned and you know, reach our destiny, our dream. So while we are doing that, we see that what are the roles involved in it. We can practice in FDI, FEMA, we can practice in IPRs, which is called the intellectual property rights. We can practice or specialize in insolvency. We can specialize in GST, goods and service tax. So all these things have emerged in last few years, and when we look at it, definitely needs at least a 10 or 12 years of experience so that you are groomed enough to specialize into individual streams, right? So CA in fact has got the ability, you know, you have been coaxed, you have been taught, you know, by way of the curriculum, your traineeship, your exposure in the industry, that you then dwell upon and take a particular stream like I did. You know, when your company is in a tough situation, you learn the most, and we as CAs have this habit
We have this inbuilt ability to grab and to mold in those situations, right? That's what we did. So, in this various scheme of things and opportunities for CA, it will be great if you tell us little more about what you are doing into this insolvency professional scenario, and what exactly is that? Yeah, sir, sure. Tiwari ji, ये जो insolvency act है ना, this is a new act. In India, we never could have expected before this act came into enactment that litigations in liquidations, winding ups, restructurings can happen in a span of 6 months to 1 year. So this was all there in the in developed nations like UK, US, Australia, but never in India we could have thought of such enactments, right? 30, 40 years of liquidations, winding up proceeding, reaching out nowhere. The asset is, just a viable asset getting to a worse position. No buyers, no sale, nothing happening. But yes, thanks to this government who brought in this beautiful act, which has a time bound restructuring revival proposition or a procedure, right? Revival is a key word here. In insolvency, everything starts from revival. So this shows the maturity of the economy. Very much. And the direct beneficiary as an expert in finance are CAs. Correct, sir, very much. CA has that ability, that dynamic upbringing, that they can accommodate into various situations, specialize into it, and really work hard to reach a position where they can really do justice to that particular field where they are specializing. When the stakeholders look at you as a CA, they expect a lot from you, right? And when you specialize into a stream, the trust factor in us is so much, right? So we carry a lot of responsibility on ourselves, right? So that basic thing makes us a CA. So I would urge everyone to pick up one stream where they can dwell upon, specialize into, right? A lot of things are coming up going forward in the Indian economy where we will get a lot more to explore. So while we are doing that, bear in mind that you specialize into things. You are not limited to just the basic audit or taxation or accounting. You have much bigger role to play, right? So that's why I feel, there's a lot more things are emerging in India. So thanks Nitin for your insight into the various opportunities, and this keeps coming every few years in the way of CA, because the course is such designed that it gives you that flexibility and adaptability to just work hard on yourself, pick up any topic and you can do wonders. And I would like to share my experience, because I moved into health insurance space. So insurance essentially is a financial domain. So when I moved into it, so I had to understand and learn insurance. So like your point of specialization, to make a mark in any field, we need to train ourselves, go through the available courses so that we become more professional, more understand the base subject as well. So I did the same thing at that point in time. Insurance Institute of India and National Insurance Academy, NIA Pune, these were the two institutes which were providing formal education. I am talking about 2005, 6, 7. So I grabbed that opportunity, and I became fellow in insurance from Insurance Institute of India and completed my MBA PGDBM from NIA Pune. So that gave me an opportunity to learn insurance and specialize in health insurance. And then our institute also has got a post qualification course called DIRM, Diploma in Insurance and Risk Management, which I completed that as well. So I fully agree with you on the fact that we should pick up, depending on our interest level, the specialization, and when we do, then we should train ourselves well and get all the courses done, whatever, to make ourselves more knowledgeable about the subject so that we can deliver our responsibilities well. आज मैं स्ट्रेटजिक प्लानिंग करता हूँ.
आज मैं बजटिंग करता हूँ. So CA is not only doing the finance, the backbone of an organization. He is associated with each and every facet of an organization. Maybe today I am CFO. The next role would be there for me as a CEO. गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है. I am in dilemma. The specialization versus all-rounder. Which way I should go? Sir, dilemma की बात आप कर रहे हैं. CA कैसा प्रोफेशन है? आज सारी दुनिया दिवाली मना रही है और पटाखे फोड़ रही है, और हम CA स्टूडेंट्स किताबों से अपना माथा फोड़ रहे हैं. मई नवंबर का चक्रव्यूह में मैं भी फंसा हुआ हूँ. ये पिलो ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे आ जाता था. CA फाइनल ने मुझे सिखाया कि फेलियर क्या होता है और फेलियर से उबर के कैसे आना है. मैंने भी चखा है स्वाद. सक्सेस का मजा फेलियर के बाद ही आता है. आप एक बार फेल होते हो, देन यू रियलाइज व्हाट सक्सेस इज बेसिकली. एग्जाम्स के बीच में शादी किया हूँ और उसी अटेम्प्ट में मैंने CA क्लियर किया. प्रैक्टिकल शिप के बिना इस कोर्स को इमेजिन करना ही नामुमकिन है.